Hello everyone. Today we are going to start with the 15th chapter of SS, that is Economic Development. Before starting with our chapter, we must try to understand the title first, Economic Development. So, what is economy and what is development? चलो अभी देखते हैं what is economy. Economic term came from economy only. इकोनॉमी एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों से बना हुआ है. मल्टीपल पीपल टुगेदर क्रिएट अ सोसाइटी एंड द वे इन विच दिस पीपल लिव एंड कैरी आउट देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इट्स द एक्टिविटी वेयर मनी इज इन्वॉल्व. मतलब एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट है. मतलब क्या? पैसे का लेन देन होता है. So we can say that economic is a system in which people perform their economic activity by purchasing commodity to satisfy their own needs. So that is what economy is. Second, what is development? अभी development है क्या? Development मतलब विकास. विकास जो हम बोलते हैं वो है क्या? That is change. It means positive change or improvement. Or else we can say that progress. So all these are development. Positive change can be measured in terms of monetary and non-monetary. Monetary means money. So this was just the introduction part. Now let's talk about the actual definition of economic development. Now, as per economist, economic development is based on three things. First thing is, it says that constant rise in national income of a country. Second, increase in per capita income of a country. Third, increase in living standard of people. So what is economic development? It is all about these three given points. Now let's look at each of these in detail. National income. अभी national income मतलब है क्या? It means country के total income. In simple words, it is the total income of the entire country. So we can say that national income is a monetary value of all final goods and service in the country during specific period of time. Now what is the meaning of this? इसका मतलब ये है वो गुड्स एंड सर्विस जो कंट्री के अंदर बनाए गए एक साल में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, उस चीज़ के बनाने के बाद उसको बेच के जो प्रॉफिट कमाया है वो एक इंसान ने कमाया, एक बिजनेस ने कमाया. ऐसा वो प्रॉफिट सपोज हम टोटली सारे लोगों का मिलाते हैं तो सब लोगों का मिला के हुआ नेशनल इनकम. अंडरस्टूड? जीडीपी ऑफ इंडिया in 2015 and 17 was 1,35,67,192. So ये जो है this is actually financial data, financial status of 2015 and 2016. GDP, gross domestic product, that means goods and service that are produced within the political boundaries of the country. Now let's talk about per capita income. It means per person income. So to calculate per capita, national income must be divided with population. इसका मतलब क्या है? नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे तब जाके पर कैपिटा इनकम, दैट इज पर पर्सन इनकम, इसका मतलब है हर एक इंसान का इनकम पता चलेगा. अंडरस्टूड? अभी नेशनल इनकम क्या है? इट इज़ सम टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री. अगर इंडिया का करंट पॉपुलेशन की बात किया जाए तो इट इज़ 135 करोड़ है. तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय 135 करोड़ जब करोगे तब जाके पर कैपिटा इनकम मिलेगा, मतलब हर एक इंसान का इनकम मिलेगा. पर कैपिटा इनकम ग्रोथ इज बेटर इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज इट शोज पर पर्सन एलोकेटेड नेशनल इनकम. Per capita income growth is only possible when rate of growth of national income is more and rate of growth of population is less. तो ये पर कैपिटा इनकम हर एक इंसान का तभी बढ़ेगा जब नेशनल इनकम बढ़ेगा, उसके साथ साथ पॉपुलेशन घटेगा. हाउ वर्ल्ड बैंक हैज क्लासिफाइड per capita income of a country. Now see here, World Bank uses
per capita income as a measure to compare economic development amongst different countries. According to World Bank, that is World Development Report 2004, it says that developing country are those country in which per capita income is below $735. मतलब क्या, वो कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बोला जाएगा जिसका पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, एंड जिसका $735 से ज़्यादा है उसको डेवलप्ड कंट्री बोला जाएगा. Till now we talked about national income and per capita income, and we also talked about how World Bank has classified per capita income of a different country. But we must also understand the main fact that is development is not just monetary, that is money. It is a process of social change. Now what is social change? Social change talks about society change. How does a society change when the people will change? अभी लोगों में कैसे बदलाव आएगा जब लोगों में डेवलपमेंट होगा. Alright, first point talks about increase in national income. Second point talks about increase in per capita income. अभी देखो, नेशनल इनकम बढ़ने से लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ने से लोगों का आमदनी, दैट मीन्स लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. अभी कैसे, पहले लोग झोपड़े में रहते थे, अभी फ्लैट में, फिर बंगलों में. दैट इज़ व्हाट इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जब ये सब बढ़ेंगे तब क्या होगा, good quality life, clothing, housing, education, healthcare and transportation, all these will be easily available. So this all comprises to form economic development. Understood? So we can say that economic development consists of increase in national income of a country, increase in per capita income of a country, and because of this increase in national income and increase in per capita income, it also brings changes in the living standard of people. That means changes in the lifestyle of people.